Hello friend, how are you? Welcome to Tripan Study Center. We are going to do today is very important MCQ which will be a very important for the exam point of view, and it will be important for this competitive exam. Let's see what is our topic today. And the question here, which of these nutrient is required by the plant in the large quantity? Which of these nutrient is required by the plant in large quantity? इट मीन टू हेयर कि जो आपको यहाँ पर दिया गया है इनमें से किस पोषक तत्व की पौधों को बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी हम किस को जो है पौधों में अधिक मात्रा में देना पसंद करते हैं और पौधों को ज़रूरी भी पड़ता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपने एनसीईआरटी की बुक फॉलो किया होगा तो वहाँ पर आपको माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में पता लगेगा, यानी सूक्ष्म और वृहद पोषक के बारे में पता लगेगा। तो उससे भी आप थोड़ा नॉलेज लगा सकते हो कि किस तत्व की आवश्यकता पौधों में सबसे अधिक होता है। द ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी पोटाशियम, ऑप्शन डी मैग्नीज। You know that question is very interesting. Which of these nutrients is required by the plant is a large quantity? The answer here, option C is correct here. Potassium. Potassium nutrient is required by the plant is a large quantity. It is a macro nutrition here. Macro, not a micro. Macro nutrition. The option C is correct. Potassium is correct. And let's see next question here. Next question on your screen. The question here, reasoning and assertions here. You know that is the most important. The question here, the mass of object is away a zero. The mass of an object is away zero. Reason here, mass on object is the measuring of its initials and the substance contained by the body. That's important. The option A, both A are true, but R is the correct expression of A. Option B here, both A and R are true, but R is not a correct explanation of A. And C, A is a true, but R is a false. And D, A is a false, but R is a true. You know that question is very interesting. And mean here कि यहाँ पर आपको अभी कथन और कारण दिया गया है। कह रहा है, पहले क्वेश्चन पूछा गया है, किसी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा शून्य होता है। ये बात तो आपको पता होना चाहिए कि एक स्थान होता है जहाँ पर कोई भी वस्तु हो उसका द्रव्यमान जो होता है शून्य हो जाता है। और इसका कारण ये कह रहा है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व और शरीर में मौजूद पदार्थ के माप होता है। तो ये क्या बात सही है? तो आपको यहाँ पर एनालाइज करना है और समझना है कि दोनों कथन जो दिए हैं वो वास्तव में क्या कहता है, कि दोनों सही है, क्या एक्सप्लेनेशन सही कर रहा है। तो ये आपको समझना है। The one important fact here, marks of on the object can never be a zero. A marks of object can never be zero because marks of the object is the measuring of inertia and the substance contained by the body. The most important fact here, marks on the object can never be zero is because marks on the object is a measuring it is the inertia and the substance containing by the body. It means to the option D is correct. A is a false. A is a totally false. Marks of the not object is zero. And the R is true. R is here true. D option is correct here. And let's see next question here. The next question on your screen, question here. Observations A. When the heat energy is applied to the solid, the starting melting. Observations is here ask, when the heat energy is supplied to be solid, it is a start to melting. But reason here, solid particle take up to the heat and help in the melting. You know that question is very interesting. Question is here very interesting. मीन अगर अभी कथन की बात करें तो अभी कथन ये कहता है कि जब ठोस को ऊष्मा प्रदान की जाती है
तो वो पिघलना शुरू कर देती है। जब ठोस को ऊष्मा दी जाती है तो वो पिघलना शुरू कर देता है। और इसका कारण क्या बनता है? कारण ये होता है कि ठोस कण गर्मी ग्रहण करते हैं और पिघलने में उसको मदद करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है सही जाएगा। बहुत ही कथन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, समझने वाला है। द ऑप्शन हियर बोथ ए एंड बी आर ट्रू and R is the correct explanation of the A. Option B, both A and R are the true and the R is not a correct explanation of A. And C here, A is a true but R is a false. And D, for A false but R is a true. You know that question is very interesting. When the heat energy is supplied to be solid, it is start to melting. Yes, it is correct. Solid particle take up the heat and help to the melting. This also is correct here. It means option A is correct. Both A and R is true and R is the correct explanation of A. It means the option A is correct for this question. And let's see next question here. The next question on your screen, question here. Observation is here asks, the guard cell are a specialized epidemic cell. You know that guard cell are a specialized epidermal cell. And reason here is stomata are found in the epidermis of leaf. You know that question is very interesting. And mean here, the mean is important here कि गार्ड कोशिका विशिष्ट एपिडेमिस कोशिका है। देखिए, गार्ड सेल को एक विशिष्ट कोशिका एपिडेमिस माना गया है। और कारण बताया जा रहा है कि स्टोमेटा जो है पत्तियों की बाहरी त्वचा में पाए जाते हैं। स्टोमेटा जो है पत्तियों की बाहरी त्वचा में पाए जाते हैं। क्या ये बात सही हो सकता है? तो आपको यहाँ पर समझना है कि ये कथन क्या हो सकता है सही। द ऑप्शन है both A and R is true but R is the correct explanation of A. B is both A and R are true but R is not a correct explanation A. C here, A is true but R is a false. And D also A is a false but R is a true. You know that first of all, one important thing understand here. The understanding A and R true. A and R true because stomata are present in the epidermis of leaf. Stomata are present in the epidermis of leaf and they are initially for the transpiration and gases exchange. Stomata are the means apertures is bounded by the two specialized epidermis cell is called guard cell. It means to the options here A and B is true, but R is not a good explanation of the A. It means to the option B is correct. Both A and R is true, but R is not a correct explanation of A. It means to option B is correct. And let's see next MCQ here. The next question on your screen, question here. Acceleration से ask here, the presence of weeds affect the crop field. Presence of weeds affect the crops is a field. Know that that's important. And reason here, weeds complete for the food, space and light. You know that weeds complete the food, space and the light. That's important question for the exam point of view here. You know that meaning here. अभी कथन ये कहता है कि खरपतवार की उपस्थिति फसल के खेत को काफ़ी प्रभावित करती है। बात तो सही है, खेतों में अगर खरपतवार हो जाए, वीड्स हो जाए तो वो फसलों को ख़राब कर देते हैं, फसलों के सारे न्यूट्रिशन ले लेते हैं। बात सच्चाई है। अब देखिए कारण क्या कहता है, खरपतवार भोजन स्थान और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, यानी संघर्ष करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। खरपतवार की उपस्थिति कारण खेतों को काफ़ी प्रभावित होता है। और कारण क्या है, खरपतवार भोजन और स्थान के लिए, प्रकाश के लिए जो हमारा पौधा होता है खरपतवार में आपसी संघर्ष होते हैं। तो क्या हो सकता है? द ऑप्शन है ए, बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए. बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. And C, A is true but R is false.
and A is the false, but R is a true. But first of all, you understand the important things here. The important things here of weeds are unwanted plant in the cultivated field. The weeds are unwanted plant in the cultivated field like anthrax, plathoins, and saprosotons. And there is seeds take up nutrients and the weeds take up the nutrients and reduce the growth of crop. There is a remove the necessary. There is a remove for the necessary because there is a reduce the nutrition in growing crop. It means to the A and B is correct, means to acceleration reason is correct, and R is correct explanation. It means the option A is correct. Both A and R is true, and R is the correct explanation of the A. It means the option A is correct. That's important for the exam point of view. And learn and read.